Hey everyone, my name is Amit and you're watching Aptitude360.online. This is video number 2 of time, speed and distance. In the very first video, we learned two very important things. One, we learned how to convert kilometer per hour into meter per second and vice versa. And second thing that we learned was the formula itself. Distance is equal to speed into time. पता तो होता है सबको, बचपन से सीखा है हमने, बट उसको अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम पे यूज कैसे करेंगे। तो मैंने 5 से 6 बड़े सिंपल क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करी पहले वीडियो में in order to build upon our understanding. Now in this video I am going to be solving those 5 problems जिनका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट ये हमेशा ही एग्जामिनेशंस में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं क्योंकि आप हमेशा 90-95% ऑफ द टाइम आप गलत आंसर लगा के आते हैं। सो आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू बी क्लबिंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन वन वीडियो ताकि आपकी ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और आप एग्जामिनेशन पे गलती करके ना आए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आउट हियर. This problem says that a man in train notices that he can count 21 telephone posts in 1 minute. If they are known to be 50 meters apart, then at what speed the train is traveling? Understand this thing. So this is how people are going to make mistake. They will do this. They will say that, okay, so how many posts do we have? 21 posts we have. And what is the distance between two posts? 50 meters. So what is going to be the total distance between pole number 1 and pole number 21? So this is going to be what? If you multiply, this is going to be coming out as 1050 meters, right? And the problem is asking you to find out speed of the train in kilometer per hour. But can we find out, as per the given condition, can we find out the speed in meter per second? Yes. Problem tells you that in 1 minute is 60 seconds, right? In 60 seconds, the train travels a distance of 1050 meters, isn't it? So what is going to be the distance that train travels in 1 second, and that's going to be the speed in meter per second. So 1050 upon 60. Simplify this, it is going to be coming out as 35 by 2 meters. So what is the speed of the train? Speed of the train comes out as 35 by 2 meters per second, but the problem is asking you to find out the speed in kilometer per hour. So in the very first video you learned that in order to convert meter per second into kilometer per hour, we need to be multiplying this by 18 by 5. If you do so, this is 7 and this is 9 into 7, the answer comes out as 63. आपने आंसर लगा दिया 63, which is wrong. ये गलती हुई कहां? 90% of the people will be making this mistake in the examination scenario. गलती यहां पे ये हुई, अगर कॉमन सेंस से इस प्रॉब्लम को समझा जाए तो पोल 1 है और पोल 2 है और पोल 3 है. पोल मतलब पोस्ट से, मान लो 4 पोस्ट ही मैंने लिया. 4 पोस्ट के बीच में गैप कितना? 4 पोस्ट के बीच में गैप कितना? This is 50 meters. This is also 50 meters and this is also 50 meters. So what is the total distance from pole 1 to pole 4? In this situation, this is 50 plus 50 plus 50, which is 150. So what did you do? You multiplied 50 with 3 and you did not multiply 50 with 4. And that is the mistake that we had committed there. So from pole number 1, to pole number 21, how many gaps will be there? There will be a total of 20 gaps, not 21 gaps. और अगर 20 gaps होंगे, so what is that we should be doing? We should be multiplying. In order to find the distance, it is going to be what? 20 into 50, because each gap is of 50 meters. So the total distance is going to be 1000 meters. So in 1 minute, so I would say that this is nothing but 1 kilometer. ऐसे बोल दो भाई, आप 1 मिनट में, आप नहीं ट्रेन 1 मिनट में गया 1 किलोमीटर. सो 60 मिनट्स में जितना जाएगा उसी को आप बोलोगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सो 1 आवर में ट्रेन गया कितना? 60 किलोमीटर. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? Speed of the train is 60 km per hour and it is not 63. So
यहाँ पे किसी ने टाइपो मिस्टेक करी, इट शुड हैव बीन नन ऑफ दीज, एंड द राइट answer is 60, and in this case it is none of these. So I hope you're understanding this one. Now let us move ahead and solve this problem. It says that an express train travels at an average speed of 100 km per hour, stopping for 3 minutes after every 75 km. but हर बार 75 km चलेगा और फिर बोलेगा मैं थक गया, मेरे को रुकना है. तो मान लो यहां से चलना शुरू किया ट्रेन ने, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चला, फिर ये गया 75, and then it went 150 and 225 and then 300 and then 375, isn't it? And then 450 and then 525 and then 600. समझदार लोग क्या बोलेंगे? समझदार लोग बोलेंगे यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. How many gaps, how many times the train is stopping? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Since एक बार रुका तो कितने मिनट रुका? 3 minutes. So if it is stopping for 8 times, the total number of minutes when the train will be stopping during the journey is 24 minutes, right? यही तो लोग बोलेंगे. And what is going to be the travel time when the train is traveling without any interruption? So the speed is given to you as 100 km per hour, and the distance out here is 600 kilometers, and if the train will have to run without stopping anywhere in between, then the travel time would have been 6 hours. तो ये 6 hours जो ट्रेन चला और ये 24 minutes जो ट्रेन रुका. So what is going to be the total time? People will say this is 6 hours 24 minutes, which is wrong. Why this is wrong? Because एक तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कहां पे हुई कि भाई जब आप यहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर आप कहां रुकने वाला टाइम इंक्लूड कर रहे हो. So how many times the train is stopping in between? The train is stopping at 75 kilometers and then 150 and then 225 and then 300 and 375 and then 450 and then 525. How many times the train is stopping? It is stopping only 7 times in between. And if the train is traveling is stopping only 7 times, so how many minutes the train is stopping in between? It is 21 minutes. So what should be the answer out here? The answer should be option number A, which is 6 hours 21 minutes. But majority of the students, and trust me, आपको लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल है, but majority of the students in an examination scenario जहां पे दिमाग 50% काम करता है, वो ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाएंगे. अच्छा, अनदर अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपको ये सब लिखने की जरूरत है क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि बीच में अगर रुकना है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? अगर 6000 किलोमीटर दे दिया तो दैट आप इतना लिखते जाएंगे क्या? So what is that we should be doing in the examination scenario? मेरे को जब भी इस प्रॉब्लम को लगाना होगा, मैं इसको ऐसे लगाने की कोशिश करूंगा. मैं क्या करूंगा? I will divide 600 from 75. And how many times it is coming? 8 times. So what does that mean? This quotient 8 tells you that there are 8 numbers that are in the table of 75, including this number. यानी 1 to 600 there are 8 numbers that are in the table of 75. ये है अंडरस्टैंडिंग इसकी. और ये बीच में रुकेगा कितनी बार? क्योंकि लास्ट में तो रुकेगा नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है. सो हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू बी स्टॉपिंग? इट इज गोइंग टू बी स्टॉपिंग फॉर only 7 times and not 8 times. Does this make sense to you? I hope you're understanding this thing. Now, अगर प्रॉब्लम आपसे ये बोल देता है कि भाई 6000 किलोमीटर अपार्ट है और ट्रेन हर 75 किलोमीटर पे 3-3 मिनट रुकती है, आप बता दो ट्रैवल टाइम. मैं क्या करूंगा? 6000 को किससे डिवाइड करूंगा भाई? 75 से. And if I would do that, what is that I'm going to get? I'm going to get 80 times, isn't it? So understanding number one for your comprehension.
There are 80 numbers that are in the table of 75 from 1 to 6000 and 6000 is the destination. उसको include करना मत. So how many times, the number of times the train is stopping in between? The train is stopping in between how many times? 79 times. तो आप stoppage वाला time निकाल दो, 79 into 3. And this is coming out as what? 237 minutes. Does this make sense? And then अनइंटरप्टेड अगर ट्रेन को चलाना है तो 6000 मीटर्स किलोमीटर 6000 किलोमीटर है ना, 6000 अपॉन 100, ये आ गया 60 आवर्स. 60 आवर्स प्लस दीज मेनी मिनट्स. अब आप कन्वर्ट करते फिरो. ये तो आसान तरीका है प्रॉब्लम लगाने का, राइट? सो व्हाट डिड यू लर्न इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आपको एक कम कहां पे करना है, राइट? इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेट अस मूव हेड. ओह, दिस वन इज फैंटास्टिक प्रॉब्लम. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये घूम फिर के एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी सीसैट में, आप सीडीएस देख लो, एनडीए देख लो, कहीं ना कहीं पे ये आपके यहाँ एग्जामिनेशन में आता ही रहता है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड द एसेंस बिहाइंड सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर तो आप हमेशा ये लगा लोगे. बट इफ यू हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो फिर तो आप पक्का गलत करके आओगे इसको. सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड सी इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर. And the problem tells me this. Problem tells me that a monkey climbing a pole ascends 6 meters and slips 3 meters in alternate minutes. In alternate minutes. Monkey ये रहा, मान लो ये रहा monkey. ये है monkey. भाई मेरा monkey ऐसे बन रहा है. Monkey बड़ा जोशीला 6 meters गया कूद के और फिर वो थक गया. तो फिर वो क्या हो गया? 3 मीटर्स नीचे आ गया. सो इफेक्टिवली हुआ क्या? इफेक्टिवली हुआ इन 2 मिनट्स, इफेक्टिवली इन 2 मिनट्स द मंकी हैज क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 3 meters. डज दिस मेक सेंस टू यू? nobody would deny this. Now what is the height of the pole? The height of the pole is given to you as 60 meters. तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई चलो 3 मीटर्स अगर जाना है मंकी को, तो वो ऐसा करने में उसको कितना मिनट लगता है? 2 मिनट्स लगता है. तो 60 मीटर्स की हाइट तक जाने के लिए मंकी इज गोइंग टू बी टेकिंग हाउ मेनी मिनट्स? इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 40 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा. और ये ऑप्शंस भी होगा, बट ये आंसर नहीं होगा. आपने कुछ तो भी सोचने में गड़बड़ किया यहां पे. एंड व्हाट इज दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड दिस. let us see this. Say this is the height of 60 meters, and you know that in 1 minute monkey climbs 6 meters. तो आप ये सिचुएशन ऐसे सोचो ना, जहां पे ये 6 meters को हटा के the monkey somehow has managed to climb a height of 54 meters. अब अगर monkey 54 meters की height तक पहुंच गया, so how many times monkey will be taking in order to reach at the top? Monkey is going to be taking only 1 minute to reach here, only 1 minute, and the monkey is on the top. And once the monkey is on the top, फिर वहां से तो वो फिसलेगा नहीं ना भाई. आप जबरदस्ती क्यों फिसलाओगे उसको? तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये निकालना है कि ये 54 मीटर्स के हाइट तक जाने में मंकी को एक्चुअली कितना मिनट लगेगा. And at the rate that we have been talking about, what did we talk about? In 2 minutes, monkey climbs a height of 3 meters. So let us find out, in order to reach 54 meters, how many minutes the monkey is going to be taking. If you simplify, it is coming out as 36 minutes. So in 36 minutes, from here, from bottom to here, the monkey has reached a height of 54 meters. And in the next 1 minute, monkey is going to climb at the top.
So in how many minutes the monkey is going to be reaching at the top? ये यहां से यहां इसको टॉप पे पहुंचने में टोटल कितने मिनट लगे? 37 मिनट्स लगे. So what is the answer of this problem? It is 37 minutes. अब आप ये बताओ मेरे को, क्या ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है? It has nothing to do with time, speed and distance. Rather it has to do with your common sense. Rather it has to do with your numerical abilities. अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसको उस प्रॉब्लम को समझ के रखना. Now let us solve this one. A bus moving at a speed of 24 meters per second begins to slow down at the rate of 3 meters per second each second. How far does it go before it stops? आप अपने कॉमन सेंस लगाते फिरो. एक तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, ये तो वैसे आपको भूलेगा भी नहीं कभी. v square is equal to 2u square plus 2as, and what is a? A is the acceleration or deceleration. What is v? The final speed. What is u? The initial speed. Initial speed is given to you. In this case it is 24 meters per second. And what is the final speed? It has to be 0 because it says that it has to stop. So 0 is equal to 24, and in this case a is what? Acceleration. It is deceleration क्योंकि ये कम हो रहा है. So this is what? -3. Slow at the rate of 3 meters per second. So this is 3 meter per second square is the deceleration. And कितना चलेगा ये आपको पता करना है. So आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे, so 2 into 3 into s is going to be 24 square, which is 576. What is going to be the distance traveled? 576 upon 6. If you simplify this, it is going to be coming out as 96 meters, and your problem is simplified, isn't it? Now, does this have something to do with time, speed and distance? I don't think so. Now, let us solve this problem out here. It says that a car is driven at the speed of 100 km per hour and stops for 10 minutes at the end of every 150 kilometers. In how many hours will it cover a distance of 1000 kilometers? Understand this. Without any stoppage, had there been no stoppage, then how many hours the car will be taking in order to reach the destination? It's pretty simple for you to find out. What is the distance out here? The distance is 1000 kilometers. And what is the speed out here? 10 kilometers per hour. And I must have told you in my video number 1 that कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, आउट ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स प्रॉब्लम हमेशा आपको 2 वेरिएबल देगा और वो आपसे तीसरा वाला वेरिएबल जानने की कोशिश करेगा. सो इन दिस केस you know that distance is equal to speed into time. Now distance has been given, speed has been given. The problem is asking you what is time. So time आएगा कितना भाई? Time आएगा distance upon speed. It is 1000 upon 10, and what is this? 10 hours. Had there been no stoppage, then the car would have taken 10 hours. यही तो प्रॉब्लम है. अब वो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, रुकना पड़ेगा आपको. कितना रुकना पड़ेगा? 10 मिनट रुकना पड़ेगा. कितनी बार रुकना पड़ेगा? 150 किलोमीटर्स के बाद में रुकना पड़ेगा. तो चलो जी ट्रेन यहां से चलना शुरू, ट्रेन नहीं, बार बार ट्रेन क्यों, कार भी तो हो सकती है. कार ने चलना शुरू किया, यहां पे रुका होगा, देन द कार वुड हैव स्टॉप्ड हियर and here and here. इसके बाद तो कार नहीं रुकेगा ना. I hope you're understanding this. 1 2 3 4 5 6. How many times the car is stopping? 6 times. और हर बार कितने मिनट के लिए रुकता है? 10 मिनट्स के लिए रुकता है. तो अगर ऐसा है, what is going to be the time? कितना देर वो रुकेगा? 60 मिनट्स. कैन यू से दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. तो ये तो जो 10 आवर्स चलने वाला टाइम था और ये 1 आवर रुकने वाला टाइम, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल ट्रैवल टाइम? इट इज ऑप्शन नंबर बी, 11 आवर्स. प्रॉब्लम इज सिंपल, राइट? सो नेवर मेक दोस मिस्टेक्स. और दिस प्रॉब्लम, इसकी अपीयरेंस ना हर जगह होती है और है तो बड़ा सिंपल. इट हैज समथिंग टू डू विद रेशियो प्रॉब्लम्स. इट सेज दैट अ मैन परफॉर्म्स 3/5 ऑफ द जर्नी बाय रेल, 7/20 by bus, and the remaining distance
which is 6.5 kilometers on foot. What is his total journey? Now, can I say this? Let the total journey be x किलोमीटर. ठीक है जी. So 3/5 of the journey on the rail and 7/20th of the journey on the bus and then remaining कितना 6.5 किलोमीटर which is x. आप इतना तो कर ही सकते हो. So can you find out foot का निकल के कितना आ रहा है? So can I say this is 20 and this one is going to be what? This is going to be 12 plus 7. If you simplify, x plus 6.5 kilometers is equal to x. So which is what? 19/20x plus 6.5 is equal to x. Will be, isn't it easy for you to find out the value of x? So if it goes on this side of equality, so 6.5 is x negative 19/20x. And 19/20x को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, it will be 1/20x. 1/20x का मतलब कितना हो गया? The value of x will come out as 6.5 into 20, which is what? 13/2 into 20. And if you simplify this, don't you think, are you getting, you're gonna get 130 kilometers. Simple. अब आप इस एसेंस को समझ के रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप बनाते जाओगे. So this is what we had in this video, people. In the next video, I'm going to be solving 6 problems जो बिल्कुल आसान दिखते हैं बट वो होते नहीं है. अगर आप वो एक एक लाइन वो प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग समझते जाओगे तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे. बट as I said that there is only one formula in these kind of problems, which is distance is equal to speed into time. बाकी तो जितनी बार हम प्रॉब्लम्स लगाते जाएंगे, जितनी वैरायटी की लगाते जाएंगे, उतनी बार हम थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस ऐड करते जाएंगे और फिर वो हमारे लिए आसान होता जाएगा. So I am gonna see you in video number 3 of time, speed and distance. Till then, bye bye and take care, and thank you very much for watching this one.